or who passed away today, we begin our program Parikrama by listening to news headlines in Hindi by Naveen अनीता Saxena. कहते हैं ज़िंदगी अगर एक किताब होती और उसे हम पढ़ सकते तो शायद भविष्य की चीज़ें जान सकते थे कि क्या कुछ है भविष्य में, और अगर भविष्य की बातें जान लेते तो शायद ऐसा ना होता जो कल हुआ। जी, मनोहर पर्रिकर सौम्य, सहज, कर्मठ नेता हम सबके बीच से चले गए। शायद यही सच है, या यही कहना होगा कि उस जहां में भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए तो कम उम्र के अंदर जब जीवन में कुछ करना होता है तो शायद वो इन लोगों को यहाँ से उठा लेता है। राइट। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज शाम 5 बजे यानी अब से कुछ ही देर में पणजी के मीरामार बीच के पास पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में लाया गया था और अब जनता के दर्शनों के लिए कला अकादमी में रखा गया है। अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शनों के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री पर्रिकर के सम्मान में केंद्र राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर चुका है और देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है। गोवा में 7 दिन तक राजकीय शोक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में कला अकादमी में दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पर्रिकर के बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल मृदुला सिन्हा, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, आयुष मंत्री श्रीपद नायक, लोकसभा सांसद नरेंद्र सवाईकर और राज्यसभा सदस्य विनय तेंदुलकर ने भी पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त की है। गोवा में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के बीच विचार विमर्श चल रहा है। श्री गडकरी ने पार्टी नेताओं से और गठबंधन के सहयोगी दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। गठबंधन सरकार में भाजपा के 12, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी गठबंधन में शामिल हैं। इस बीच राज्य में कांग्रेस के सभी 14 विधायकों ने एक बार फिर राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के पहले चरण के चुनावों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस महीने की 25 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं, जिनकी जांच 26 तारीख को होगी। 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले चरण में अगले महीने की 11 तारीख को मतदान होगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी आज जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और गिनी को आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आज राष्ट्रपति भवन में गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिमा कसोरी फोफाना का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 2017-18 में दोनों देशों का व्यापार $90 करोड़ तक पहुंच गया था, जो कि पिछले इस वाले वर्ष की तुलना में 40% अधिक था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में विषय रख रहा है जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का आधार। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने 2 दिन की मालदीव यात्रा के समापन से पहले आज वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की। उन्होंने मालदीव के गृह मंत्री और अदालत पार्टी के नेता शेख इमरान अब्दुल्ला के साथ बैठक की। And time now for our science capsule, Naveen. Our first story tells us that NASA has found that more than half the astronauts who traveled on the space shuttle and stayed aboard International Space Station, we are talking about ISS, triggered the dormant herpes viruses. And this has led to, dangerously so, significant health risk for human missions to Mars and beyond.
Another story tells us that in order to understand conditions of exoplanets, NASA researchers have created the atmosphere of a super hot planet outside our solar system, and that too here on Earth. सोलर सिस्टम को समझना ही अपने आप में एक जटिलता है, लेकिन विज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रचा बसा हुआ है और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य और उसके आसपास की जटिलताओं और जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं उनकी जटिलताओं को समझा जा सके। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि गाहे बगाहे हमारे आसपास विज्ञान में जो भी घटनाएं घटती हैं हम उसको आप तक पहुँचाएँ, और परिक्रमा कार्यक्रम का ये हिस्सा है। आइए सुनते हैं। NASA has found that over half the astronauts who traveled on the space shuttle and stayed aboard International Space Station ISS triggered the dormant herpes virus, posing significant health risk for human missions to Mars and beyond. Researchers, including one of the Indian origin, say that while only a small proportion develop symptoms, virus reactivation rates increase with space flight duration and could present problems for deep space missions. During space flight, there is a rise in secretion of stress hormones like cortisol and adrenaline, which are known to suppress the immune system. In keeping with this, the researchers found that astronauts' immune cells, particularly those that normally suppress and eliminate viruses, become less effective during space flight and sometimes for up to 60 days after. As a result, dormant viruses reactivate and resurface. Satish K. Mehta of KBR, while at the Johnson Space Center, said to date 47 out of 89 astronauts on short space shuttle flights and 14 out of 23 on longer ISS missions shed herpes virus in their saliva or urine samples. He said that the magnitude, frequency and duration of viral shedding all increase with length of space flight. Overall, 4 of the 8 known human herpes viruses were detected during the study. These include the varieties responsible for oral and genital herpes HSV, chickenpox and shingles VZV. While so far this viral shedding is typically asymptomatic, the continued virus shedding post-flight could endanger immunocompromised or uninfected contacts on Earth like newborns. The findings has major implications for human deep space missions beyond the Moon and Mars, as the risk that herpes virus reactivation poses to astronauts and their contacts could become more crucial. Scientists have found that the world's oldest viable semen, isolated from rams and stored for over 50 years in a laboratory, has been used to successfully impregnate ewes. The researchers said the resulting live birth rate was as high as that from sperm frozen for just 12 months. Simon de Graaf from the University of Sydney said that this demonstrates the clear viability of long-term frozen storage of semen. He said the results show that the fertility is maintained despite 50 years of frozen storage in liquid nitrogen. De Graaf added that the lambs appear to display the body wrinkle that was common in merinos in the middle of last century, a feature originally selected to maximize skin surface area and wool yields. That style of merino has since largely fallen from favor as the folds led to difficulties in shearing and increased risk of fly strike, he said. Researchers believe that this is the oldest viable stored semen of any species in the world and definitely the oldest sperm used to produce offspring. Jessica Rickard, a postdoctoral fellow at University of Sydney, did the original work to determine if the stored semen was viable for artificial insemination. This involved thawing the semen, which is stored as small pellets in large vats of liquid nitrogen at minus 196 degrees. The team then undertook in vitro tests on the sperm quality to determine the motility, velocity, viability and DNA integrity of the 50-year-old sperm. Out of 56 ewes inseminated, 34 were successfully impregnated. This compares to recently frozen semen from 19 sires used to inseminate 1,048 ewes, of which 618 were successfully impregnated. This gives a pregnancy rate of 61% for the 50-year-old semen against 59% for recently frozen sperm, a statistically equivalent rate. In order to understand
understand conditions of exoplanets, NASA researchers have created the atmosphere of a super hot planet outside our solar system here on Earth. Scientists at NASA's Jet Propulsion Laboratory JPL in California used a high-temperature oven to heat a mixture of hydrogen and carbon monoxide to more than 1,100 degrees Celsius above the temperature of molten lava. The aim was to simulate conditions that might be found in atmospheres of a type of exoplanets called hot Jupiters. An exoplanet or extrasolar planet is a planet outside the solar system, and hot Jupiters are gas giants with orbits close to their parent stars, unlike the most planets in our solar system. The team began with a simple mixture of hydrogen and 0.3% carbon monoxide and heated it to 330 to 1230 Celsius. They also exposed it to a high dose of ultraviolet radiation. The tests, published in the Astrophysical Journal, revealed some new details about the possible alien atmospheres. Observations of real planets have shown that their atmospheres are often opaque, even at low pressure where clouds are not able to form. The team's artificial atmosphere also came out opaque due to the UV light forming organic aerosols, solid particles in the air. Benjamin Flory, a JPL research scientist, said that this result changes the way the scientists interpret those hazy, hot Jupiter atmospheres. He added that his team now wants to study properties of these aerosols, how they form, absorb light, and respond to changes in the environment. Flory added that this can help astronomers understand what they are seeing when they observe those planets. The study also showed chemical reactions produced significant amounts of carbon dioxide and water. Co-author of the study, Mark Swain, said that these new results are immediately useful for interpreting what we see in hot Jupiter atmospheres. That was the science capsule read by Nina Erekel. Moving on. ये थी विज्ञान जगत की बातें, और विज्ञान जगत की बातों के बाद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं खबरों की दुनिया में और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है अनीता से अंग्रेजी में। External Affairs Minister Sushma Swaraj called on Maldives President Ibrahim Mohamed Solih today before concluding her two-day visit to Mali. She also held a meeting with country's Home Minister and leader of Adalat Party, Sheikh Imran Abdullah. Mrs. Swaraj met her Maldivian counterpart Abdullah Shahid and had a joint ministerial meeting yesterday. A joint statement said that 3 agreements were signed on visa facilitation for diplomatic and official passport holders, development cooperation and renewable energy. Mrs. Swaraj said that in line with Government of India's Neighbourhood First policy, India stands ready to support the government of Maldives in its socio-economic development. Maldives Foreign Minister expressed his government's appreciation for the key role that India continues to play in the socio-economic development of the country. Both foreign ministers agreed on the importance of maintaining peace and security in the Indian Ocean region. India has decided to divert 3 Indian naval ships to the port city of Beira in Mozambique to provide humanitarian assistance to the people affected by tropical cyclone Idai. External Affairs Ministry in a release said the ships will provide relief materials in the form of food, clothes and medicines. 3 medical practitioners and 5 nurses will provide immediate medical help. In 2017, India had provided $10 million to Mozambique for food grains after the country suffered food shortage due to natural calamities. President Ramnath Kovind has said that bilateral trade between India and Guinea reached almost $900 million in 2017-18. This represents an increase of nearly 40% from the previous year. Mr. Kovind said this while welcoming Prime Minister of Guinea, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, at Rashtrapati Bhavan today. The President said both the countries must continue to work to further enhance bilateral trade in coming years. Mr. Kovind said recent high-level visits have imparted a new momentum to India-Guinea bilateral ties. He expressed confidence that Dr. Ibrahima's visit will mark yet another high point. In Indonesia's eastern Papua province, flash floods have killed at least 77 people. This was announced by the disaster agency today as it raised the death toll from 58. More than 36 people remain missing, while scores have been injured in the disaster triggered by torrential rains and landslides. In West African country Mali, at least
21 soldiers have been killed in a raid on an army camp by suspected terrorists in central part of the country. Local media reports said the attackers stormed Diora army camp in Mopti region at dawn and left many soldiers dead. Once a beacon of democracy and stability in Africa, central Mali in recent years has been dogged by coup, civil war and terrorism. The country has in the past few years been overrun by terrorists with links to Al-Qaeda. In the Democratic Republic of Congo, at least 24 people, mostly children, were killed and 31 injured when a freight train carrying stowaways derailed. Police and medical services said the accident occurred yesterday in Kasai province in the center-west of Central African country. Most of the passengers are stowaways because it is a freight train. Several wagons have fallen into the water at the bridge over the Lium River. British leader Theresa May's government has warned that it might not hold a planned Brexit vote next week unless it feels it can secure a win that avoids a lengthy delay to pulling out of the EU. London has been paralysed by political inaction and chaos as it battles towards the March 29 end of its 46-year involvement in the bloc without a plan. Parliament has twice resoundingly rejected the separation terms May reached with the other 27 EU leaders last year. Theresa May is expected to bring a withdrawal agreement back to the Commons next week for a third vote, but May warned that another defeat would almost certainly require a delay so long that Britain would have to take part in European Parliament elections in May. In Israel, a court has ordered the temporary closure of a site building at a highly sensitive Jerusalem holy site that has been source of tensions in recent weeks. The Jerusalem Magistrates Court today said the building known as the Golden Gate at the Al-Aqsa Mosque compound, known to the Jews as the Temple Mount, should be closed while the case continues. The site's administrator, the Waqf religious organization, was given 60 days to respond to the court case involving the building. Israeli police have called for the building to be closed. Waqf spokesman Firas Dibd said it did not intend to abide by the court's decision and said the building remained open on Sunday. Jordan, the custodian of the holy site, condemned the court ruling and said that Israel would bear full responsibility for the dangerous consequences of the decision. अनिता, परिक्रमा में अब वक्त हुआ है कि सैर की जाए पूरे देश की कहाँ क्या कुछ हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति जी ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जी। Dr. Shastri is a Sanskrit scholar, Naveen, who has authored several books including Gita और कुरान में सामंजस्य, वेद और कुरान से महामंत्र एंड गायत्री और सूरा फतेहा। और आज ही हमारे साथ है। जब हमने इनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि जब आपको पहली बार ये खबर मिली तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, सुनते हैं। प्रतिक्रिया तो क्या आएगी, वो तो बहुत अच्छा लगा और बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया था कि ये कैसे होगा पद्मश्री अवार्ड के लिए। मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग भरते हैं और उसमें तो हम लोगों का नाम आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नाम आया तो बेहद खुशी हुई और पूरे परिवार के लोगों में खुशी छा गई। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जी की रुचि पुराणों में भी है और सर, पुराणों में आपकी काफ़ी दिलचस्पी रही है, हमें पता चला है। आपको इसमें कैसे इतनी रुचि आई और कहाँ से आपने इतना ज्ञान हासिल किया? मेरे दिमाग में ये बात पहले से ही थी कि मैं संस्कृत का अध्ययन करता हूँ, संस्कृत विषय का, संस्कृत भाषा का। तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊं और समाज में विद्वानों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा रख। मेरे दिमाग में ये बात थी कि जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, मानवीय चेतना को जागृत करने वाले जो छाए इन ग्रंथों में निहित है, वो बहुत दूर इंसानों से हो गया। इंसान इसे न जाने कितना पीछे छोड़ करके आगे बढ़ता चला गया और आसुरी वृत्ति के जीवन जीने लग गया। शास्त्र सम्मत जीवन जीने का अवसर ही खो दिया। तो मैंने देखा कि वेद,
उपनिषद, भगवत गीता, जिसमें शास्त्र सम्मत जीवन जीने की कला है, शास्त्र जीवन जीने की जो शिक्षाएं हैं, आदर्श जीवन का जो आदर्श है उसको संजोए रखने की जो परंपरा है इन ग्रंथों में, उनको समाज के सामने रखा जाए ताकि मानवीय चेतना जागृत हो, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, इस लोक के हित में और परलोक के हित में, हर दिशा में इसकी आवश्यकता है। That was Padma Shri Dr. Muhammad Hanif Khan Shastri talking to AIR. और अनिता, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मेट्रो के दूसरे चरण की सेवाएं शुरू की गई हैं और आने वाले दिनों में मेट्रो के लखनऊ सहित दूसरे शहरों में विस्तार और मेट्रो की सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के प्रयासों को लेकर लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव से हमारे लखनऊ संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ हो रहा है लखनऊ में मेट्रो को लेकर। मेट्रो ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, अपने आप में एक बेंचमार्क पेश किया कि किस तरीके से समय से पहले और बेहतर कार्यप्रणाली के साथ लोगों के सामने इस तरीके की सुविधा पेश की जा सकती। दूसरा चरण जो कि सबसे लंबा है, जिसमें शहर का काफ़ी हिस्सा कवर होगा, वो कितना उसको समय से पहले पूरा करना कितना चैलेंजिंग रहा, उस दौरान क्या क्या आपके सामने मुश्किलें आई? जो लखनऊ मेट्रो का जो फर्स्ट पोर्शन जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो ट्रांसपोर्ट नगर से 4 भाग था। मेट्रो हरदम एक बहुत छोटे सेक्शन से शुरू होती है, फिर एक्सपेंड होती जाती है। तो वो 8.5 किलोमीटर था। हमें उसमें भी करीब 13-14 हज़ार पैसेंजर डेली हम कैरी करते थे, लेकिन 13-14 हज़ार पैसेंजर कैरी करना मेट्रो का लक्ष्य नहीं है। मेट्रो का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। और अब ये पूरा जो 23 किलोमीटर जो कॉरिडोर है CCS एयरपोर्ट से लेके और मुंशी पुलिया था, जो शहर के बहुत सघन क्षेत्रों से होके जाता है, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कमर्शियल ऑफिसेज, हजरतगंज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, IT कॉलेज, सबको कवर करके जाता है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। एक ऐसा सुविधा का और सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से उनको डेली कम्यूट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सर, आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर है। ऐसे समय में जबकि हमने दिल्ली जैसे शहरों में देखा, दूसरी मेट्रोज में भी देखा कि लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और मेट्रो की सुविधा का लाभ उठाते हैं। लखनऊ में पार्किंग एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है मेट्रो के लिए, तो उस दिशा में क्या आपकी ओर से पहल हो रही है? मेट्रो एक स्टेप है कि हमारे रोड से व्हीकल से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए, जिससे पार्किंग का भी रिक्वायरमेंट कम होता है। इसलिए पार्किंग इन स्टेशंस लाइक सचिवालय या हजरतगंज, हम सोच भी नहीं सकते हमें पार्किंग मिला। हमारी सिर्फ एंट्रीज बाहर आई हैं, वो शहर की खूबसूरत जगहें हैं या कमर्शियल प्लेसेस हैं, ऑफिस प्लेसेस हैं, जिनमें इन एनी केस जगहों की कमी है। मोर इम्पोर्टेंट इज कि लोग वहां उतर जाएं जहां उनको आना है। मेरा अपना सोच ये है, पार्किंग का रिक्वायरमेंट लोग अपने पर्सनलाइज व्हीकल छोड़ें, इस पे आए, आराम से घूमें, ऑफिस जाएं, हजरतगंज घूमें, वापस जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And Naveen, toilet and the disposal of toilet soil is now a big problem, as we all know in the urban life. Construction of toilet and its use in Odisha is another problem. Due to scarcity of water, defective construction of toilet tanks, social behavior and other things have created hindrances in the sanitation programs of various municipalities in the state. In this case, Chaudhar municipality has gone one step ahead. We have a detailed report on this by Sudhanshu Dada, read by Swati Rekheja. This is from Bhubaneswar. In Odisha, the use and maintenance of toilets is a big problem in urban areas. In spite of having toilet in-house, some people in some areas are habited to go to field. There are also many reasons behind this habit, but Chaudhar municipality near Cuttack city has taken some steps in this regard. NGO named Practical Action has launched a project called Swachhta Samuday in Chaudhar municipality area to create awareness about use of toilets. The toilet is an important aspect of social life. It is not only to attend the call of nature, but from environment point of view, toilet can prevent human beings from many diseases. So this organization is explaining to people about the importance of toilet in social life. Another NGO, Ruchika Social Service Organization, is supporting the Practical Action in this connection. UK-based award-winning photographer Tom Oldham has clicked some shots that tell the stories of different communities of Chaudhar getting benefit from this project.
Tom Oldham visited Chaudhar and interacted with number of people who are beneficiary of Swachhta Samuday project. All these things have been exhibited in capital Bhubaneswar through a photo exhibition. The photos of the sanitation, drinking water, toilet, public health service, disposal of liquid waste have been exhibited at the exhibition. The 5-day-long exhibition was inaugurated by veteran freedom fighter Padma Shri Bhambani Charan Patnaik. With Sudhanshu Dhada's report from Bhubaneswar, Swati Rakheja for Parikrama. And time now to give our listeners the business update. This is read by Kamal Saxena. In stock and bullion market news today, at the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 71 points or 0.2% to close at 38,095. The Nifty at the National Stock Exchange gained 35 points or 0.3% to 11,462. But in the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.2% and the Small Cap Index shed 0.1%. Key indices in other Asian markets posted solid gains. So Japan's Nikkei 225 index rose 0.6%, China's Shanghai Composite Index jumped 2.5%, Hong Kong's Hang Seng Index climbed 1.4%, Singapore's Straits Times Index gained 0.4%, and South Korea's Kospi Index added 0.2%. In Europe, London's FTSE 100 had risen 0.8%, France's CAC 40 had gained 0.2%, and Germany's DAX had traded marginally higher in intraday trade. Back home, gold fell 280 rupees to 32,830 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market today on easing demand from jewelers. Silver slipped 345 rupees to 38,725 rupees per kilo on reduced offtake by industrial units and coin makers. Silver coins dropped 1,000 rupees to 79,000 rupees for buying 100 pieces. Kamal Saxena for Parikrama. शेयरों के उतार चढ़ाव और क्या कुछ रहा सोने चांदी की दुनिया में, उन सब की खबरों के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं खेल के मैदान में, जहां इंतजार कर रहे हैं विशाल अब तक की तमाम खेल खबरों के साथ। विशाल। धन्यवाद नवीन। सबसे बात पहले कर लेते हैं टेनिस की। तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को 3-6, 6-3, 7-5 से हराकर कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया है। थिएम एटीपी मास्टर्स 1000 क्लब में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनका ये 12वां एटीपी टूर खिताब है। थिएम ने फेडरर को 3-6, 6-3 और 7-5 से हराया। अब बात आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग की कर लेते हैं। तो कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल की श्रृंखला के बाद विराट कोहली बल्लेबाजों की ताज़ा रैंकिंग में पहले और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर तीसरे स्थान पर और दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक चौथे स्थान पर हैं। गेंदबाजों की सूची की बात करें तो गेंदबाजों में बुमराह 774 अंक के साथ पहले स्थान पर और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट दूसरे स्थान पर हैं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम रैंकिंग में इंग्लैंड शीर्ष पर और भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। हांगकांग में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लड़कों की मेडले रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत से खेल के अंतिम दिन भारत की युवा टीम पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रही। उसे 8 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 26 पदक मिले। चीन 31 पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। उसने 12 स्वर्ण, 11 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। जापान 6 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। Thank you, Vishal. And now we come to the last segment of our program, where we remember people who are either born this day or who passed away today. We begin with the death anniversary of the Indian playback singer who did a lot of singing in the 1930s and 40s. We are talking about Rajkumari Dubey, best known for songs like Sun Beri Balam Sach Bol Re in Bavrinan. अनिता, उनका नाम भले ही नई पीढ़ी के लिए विस्मृत हो चुका हो, खो चुका हो, लेकिन पुराने संगीत के चाहने वालों में उनका नाम आज भी उसी अदब के साथ लिया जाता है जैसे उनके वक्त लिया जाता था। उनकी आवाज़ में एक अनोखी मिठास थी जो भुलाई नहीं भूलती। अपने ज़माने की अग्रणी और बेहद ही प्रतिभाशाल गायिका रही थी राजकुमारी दुबे जी। एंड शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ वेरी यंग एज ऑफ 11 एज अ चाइल्ड एक्टर इन राधे श्याम और जुल्मी हंस, रिलीज इन 1932. Thereafter she worked in theatre for a couple of years before returning to films. और महज 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना पहला गाना HMV को रिकॉर्ड कराया था। गाने के बोल थे सुन बैरी बल्लम सच बोल रे अब क्या होगा। Today is also the birth anniversary of the actor of yesteryears. We are talking about Shashi Kapoor, an actor, film producer, recipient of several accolades and National Film Awards, 2 Filmfare Awards also.
He also acted, Naveen, in a number of English language films produced by Merchant Ivory, and for its contributions to film, the Government of India honored him with Padma Bhushan in 2011 and Dada Saheb Phalke Award in 2014. आज के इस परिक्रमा कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है अपने श्रोताओं से अलविदा कहने का। इजाजत दीजिए नवीन और अनीता को, लेकिन आप सुनते रहिए AIR FM गोल्ड। नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में अंतिम संस्कार मीरामार में किया जाएगा। उनका लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया था। पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी में भाजपा मुख्यालय में लाया गया था। श्री पर्रिकर के सम्मान में केंद्र राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर चुका है तथा देश भर में आज राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है। गोवा में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में कला अकादमी में दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पर्रिकर के बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यपाल मृदुला सिन्हा, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, आयुष मंत्री श्रीपद नायक, लोकसभा सांसद नरेंद्र सवाईकर और राज्यसभा सदस्य विनय तेंदुलकर ने भी पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिवंगत नेता के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। मंत्रिमंडल ने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने अनुभवी और कुशल नेता खो दिया है। उन्हें लोग प्यार से आम जनता का मुख्यमंत्री कहते थे। आधुनिक गोवा और देश के सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। गोवा में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के बीच विचार विमर्श चल रहा है। श्री गडकरी ने पार्टी नेताओं से और गठबंधन के सहयोगी दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। गठबंधन सरकार में भाजपा के 12, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी गठबंधन में शामिल हैं। इस बीच राज्य में कांग्रेस के सभी 14 विधायकों ने एक बार फिर राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस महीने की 25 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है, जिनकी जांच 26 तारीख को की जाएगी। 28 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले चरण में अगले महीने की 11 तारीख को मतदान होगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी आज जारी कर दी गई। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम आज शुरू हो गया। टिहरी सीट के लिए उम्मीदवारों को नामांकन पत्र देहरादून में भरने होंगे क्योंकि चुनाव अधिकारी वहां हैं। नैनीताल, उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्चे रुद्रपुर में भरे जा रहे हैं। अल्मोड़ा के लिए अल्मोड़ा में, पौड़ी के लिए पौड़ी में और हरिद्वार के लिए हरिद्वार में पर्चे भरे जाएंगे। राज्य में एक ही चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। असम में लोकसभा चुनाव के लिए तेजपुर, कालियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के लिए पहले चरण में मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 मई है। कांग्रेस ने पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने आज लोकसभा की 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। ये निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी, नबरंगपुर, ब्रह्मपुर, बारगढ़, अस्का, कंधमाल, बोलांगीर, कोरापुट और सुंदरगढ़ हैं। पार्टी ने विधानसभा की 54 सीटों के लिए भी प्रत्याशियों की घोषणा की। तमिलनाडु में अभिनेता विजयकांत के नेतृत्व में डीएमडीए के पार्टी ने अपने हिस्से की सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ रही डीएमके को राज्य में 4 सीटें दी गई हैं। तमिलनाडु के मदुरै लोकसभा क्षेत्र में मतदान की अवधि में 2 घंटे की वृद्धि की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने आज चेन्नई में ये जानकारी दी। ये निर्णय शहर में मनाए जाने वाले लोकप्रिय पर्व कल्लड़गर के कारण लोगों की मांग पर किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और गिनी को आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आज राष्ट्रपति भवन में गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिमा कसोरी फोफाना का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 और 18 में दोनों देशों का व्यापार $90 करोड़ तक हो गया था।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी 2 दिन की मालदीव यात्रा के समापन से पहले आज वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से मुलाकात की। उन्होंने मालदीव के गृह मंत्री और अदालत पार्टी के नेता शेख इमरान अब्दुल्ला के साथ भी बैठक की। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 71 अंक बढ़कर 38,095 पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंक की वृद्धि के साथ 11,462 अंक हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Neena Rakel. The last rites of Goa Chief Minister and former Defence Minister Manohar Parrikar will be performed in Panaji with full state honours this evening. He passed away yesterday after a prolonged illness. Mr. Parrikar's mortal remains were kept at the state Bharatiya Janata Party headquarters in Panaji earlier today. Union Ministers Nitin Gadkari and Sripad Nayak and MP Narendra Savaikar and other senior BJP leaders paid their last respects to the departed leader. Prime Minister Narendra Modi paid homage to Mr. Parrikar at Kala Academy. The final rites will be held near Miramar Beach this evening. As a mark of respect to Mr. Parrikar, the centre has announced national mourning today. The national flag will fly at half-mast across the country. In Goa, 7-day state mourning will be observed from today till 24th. Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has condoled the sad demise of Parrikar. The Cabinet observed silence for 2 minutes in memory of late Parrikar. Meanwhile, hectic parleys are on among BJP leaders led by Union Minister Nitin Gadkari to elect the new Chief Minister of Goa. Mr. Gadkari held talks with party leaders and alliance partner Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP). The Election Commission today issued a notification for the first phase of Lok Sabha polls. 91 parliamentary constituencies spread over 20 states and union territories will go to polls in this phase. The last date for filing of nominations is 25th of this month, and the scrutiny of the nomination papers will be carried out on the 26th. The last date for withdrawal of nomination papers is 28th March. For the first phase of elections, polling will be held on 11th of next month. Election Commission also issued the notification for all 32 assembly seats in Sikkim, 60 constituencies in Arunachal Pradesh, and all the 175 assembly constituencies of Andhra Pradesh. The counting of votes will be taken up on 23rd of May after the completion of all phases of polling. In Odisha, ruling BJD declared names of candidates for 9 Lok Sabha seats today. The constituencies are Kalahandi, Nabarangpur, Brahmapur, Bargar, Aska, Gandhamal, Bolangir, Koraput and Sundargarh. Names of candidates for 54 assembly seats were also declared. Former Congress MLA Nambakishore Das, who joined BJD recently, has been given a ticket for his previous Jharsuguda constituency. Some new faces also figure in the list. In Tamil Nadu, actor Vijay Kant-led DMDK has announced candidates for all 4 Lok Sabha seats allotted to the party under the NDA. In Chennai North, the party fielded its propaganda secretary Aragapuram Mohan Raj. In Karlakurchi, his brother-in-law Sudesh is the nominee. Over 30 companies of Central Paramilitary Forces have reached Assam as part of security measures for Lok Sabha elections in the state. Talking to newspersons in Guwahati today, Assam Chief Electoral Officer Mukesh Sahu said security requirements will be reviewed and more forces can be deployed as per need. Assam will go to polls in 3 phases for 14 seats on 11th, 18th and 23rd of April. President Ram Nath Kovind has said bilateral trade between India and Guinea reached almost $900 million in 2017-18. This represents an increase of nearly 40% from the previous year. Mr. Kovind said this while welcoming Prime Minister of Guinea, Dr. Ibrahima Kassouri, for Fona at Rashtrapati Bhavan today. The President said both the countries must continue to work to further enhance bilateral trade in coming years. Mr. Kovind said recent high-level visits have imparted a new momentum to India-Guinea bilateral ties.
He expressed confidence that Dr. Ibrahima's visit will mark yet another high point. In the Netherlands, multiple people have been injured after a shooting incident inside a tram in the city of Utrecht. A square near a tram station in the west of the city has been cordoned off by authorities. Emergency services, including police and medical helicopters, were at the scene of the shooting. And that is the end of the news bulletin.